And the Lok Sabha polls will be held in 7 phases. If you are tuning in now, let's just give you a brief overview of what to expect over the next few months. The 7 phases are going to begin from April 19th and will end on June 1st. The results will be declared on June 4th. Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar will conduct voting in all 7 phases. That's almost 162 out of the 543 seats. 19th April, 26th, 7th May, 13th May, 25th May, as well as 1st June are the dates for the 7 phases that are going to be held. In fact, if we look at other states, among the highest seats for Lok Sabha, Maharashtra will be voting in 5 phases. Madhya Pradesh will be voting in 2 phases for 29 seats. Karnataka will be voting in 2 phases as well for 28 seats. The assembly polls for Andhra Pradesh will be held on May 13th, Sikkim on April 19th, Arunachal Pradesh on April 19th, and Odisha will be held on May 13th simultaneously. In fact, if you look at Jammu and Kashmir, the 5 seats that will go to polls in Lok Sabha elections in 2024, all of them will be held in 5 phases for that matter, but the assembly polls will not be held simultaneously. Around let's just try and get you some data of what we have. Around 1.82 crore are first-time voters. And this was around 1.5 crores in 2019, so a comparison on just about that. Let's just listen in to the reactions that have come in from the opposition parties as well as the ruling party, BJP, and the other opposition parties. Let's see how they are reacting to the announcement of the elections. For us, it's another extra 10 days. As somebody who's been around the constituency for the last 15 years, a week more, 10 days more is not needed for me to introduce myself to the electorate. But perhaps for the new candidate who's come for the first time, that could turn out to be a blessing for him in terms of giving him more time. On the flip side, on the other hand, it gives the voters more time to realize what he stands for and what his party stands for. So these things cut both ways. June 4th was again a bit of a surprise. The 4th of June is a bit longer than I expected, but obviously I'm sure that the Election Commission knows what it's doing in terms of constitutional propriety. And if that's what it is, that's what it is. देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है और जनता के पास अभी तक अपनी आवाज़ उठाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज़ को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। Well, it's disheartening. On one side, the government of India and the Prime Minister himself wanted one nation, one election. 4 states, they are holding state elections as well as parliamentary elections. Why is this state being denied? And every party, whether it's BJP, whether it's other parties, everybody wanted elections. What is the reason? If they say the security is the reason, I don't think so. Then how is it that security is all right for parliamentary election and not for the state elections? देखिए, 7 चरण में चुनाव क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। तो ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते तो अच्छा लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारे 7 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार अनुभवी हैं,
संगठन करता है, संगठन में काम करने का अनुभव है और सब अपने अपनी फील्ड के उसमें योग्यता लिए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि उन सातों को जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और सातों भारी बहुमत से जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। We welcome the schedule for elections. India is the world's largest democracy. It's an opportunity now for us to go between the people and put forth the work done by Prime Minister Modi's government over the last 10 years. And the people of India, I'm sure, will give a very strong and overwhelming mandate to Prime Minister Modi to keep the good work going further. You know, it's going to be very interesting because if you look at the first-time voters, and as I mentioned, it's around 1.82 crore first-time voters. If you look at the young voters, it's almost 21 crore who will be under 30, between 20 to 29 years of age, that age. If you look at women voters, 95 lakh first-time women voters, 47 crore total women voters. You can already get a sense of why so many political parties have been trying to woo the women voters, whether it be in the north or the south or even in the west or east. But my colleagues right now, Pradeep from Jammu as well as my colleague Abhishek from Nagpur, have earlier spoken to residents of these areas to try and get a sense of what they think about these elections. The long wait is finally over. That everybody had been waiting for this announcement for the last several days, and now announcement has already been made by the Election Commissioner of India. But if we talk about the political parties, they are saying that they are disappointed and dejected because they were expecting assembly polls along with the Lok Sabha poll. But right now I am here at the Joggers Park in Trikundanagar. I'll be interacting with the senior citizens because they have got a lot of experience. They have seen a lot many elections. How they really are seeing the decision taken by Election Commissioner of India. I'll be talking to them. आम जनता यही सोच रही है कि इलेक्शन कराओ, जल्दी कराओ, तब कोई करेंगे इलेक्शन तो तभी लोग जनता ठीक सोचेगी। आपको लगता है असेंबली चुनाव साथ में होने चाहिए थे? नहीं, हम तो वो इसलिए कि इतनी पॉपुलेशन है, साइमल्टेनियसली दोनों कराएंगे तो कहाँ मतलब इतना स्टाफ, इतना सब कुछ, बड़ी मुश्किल है वो कराना। साथ साथ होता रहे वो ठीक रहता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज कर रही हैं, वो कहती हैं कि देखो जैसे कि यहाँ पे नॉर्मलसी की बात करते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? पॉलिटिकल पार्टी वही ऑब्जेक्शन कर रही हैं जिन्होंने 75 साल में डेवलपमेंट की, अब जो 2 साल 4 साल से डेवलपमेंट हो रही है उनको अच्छा नहीं ना लग रहा है। यानी कि लगता है कि वो सत्ता की लालच है, सत्ता के लालच में कर रहे हैं, उनको मजा नहीं ना आ रहा है इस बात का। हमने देखना है जी कि डेवलपमेंट किसने किया, कब हुई है, कहाँ से हो रही है। 70 साल से हम भी देख रहे हैं सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल जमातें जो सही बोल रही हैं या आपको लगता है कि नहीं ठीक है? सही बोल रही। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट इस दौर में हुई है। तो आपको लगता है कि ठीक है लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है अभी? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 370 कितना इंपॉर्टेंट रहा है हटने के बाद? आपको क्या लगता है कि इसका फायदा होगा बीजेपी? ये फायदा है, बीजेपी को फायदा होगा? फायदा होगा। आपको क्या लगता है आम जनता को क्या फायदा होगा? हमें भी फायदा होगा इसका। बहुत फायदा हुआ इसका हटने के बाद। आप कैसे देखते हैं ये सारा जो है? देखो 370 दफा हटने के बाद काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा है। जो जितनी भी मतलब रूलिंग पार्टी थी जिनकी मोनोपोली थी वो मोनोपोली ख़त्म हो गई। नागपुर का डेवलपमेंट हम ट्रेमेंडसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। 8 साल पहले जैसा नागपुर था या फिर आप 4 साल की अगर बात करते हैं, जगह जगह पे डेवलपमेंट दिख रहा है एंड पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग्स एंड मोर ओवर दैट जहाँ पे हम लोग की पहले कनेक्टिविटी कम थी, नाउ वी आर गेटिंग मोर इन्वॉल्व। नई नई स्कीम्स यूथ के लिए आ रही है एंड पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। सो लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली रिजल्ट तो क्लियर है कि इस बार वोट किसे करना है एंड हु विल बी इन अगेन पावर। जी, नागपुर शहर जो है वो लंबे समय तक कांग्रेस के पास में रहा था, लेकिन 14 के बाद से जब से गडकरी साहब ने नागपुर की कमान संभाली, बतौर सांसद चुन के आए, तो चेहरा मोहरा बदल गया है। यानी जहां हम तेलंगड़ी में 1983 से जब स्कूल में यहाँ आते थे तो यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ मंदिर था। यहाँ आने के लिए काफ़ी कसरत करनी पड़ती थी। उस मायने से लेके अभी 2024 पकड़ लीजिए आप, तो पूरा नागपुर शहर, नागपुर जिला पूरा चेंज हो गया है। यानी ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो गंगा जो बही है तो वो ये पिछले 10 साल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। डेफिनेटली वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि टेम्पररी बेस पे करा, तो वो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट के जो थॉट है वो बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़ते तो। बस सर इतना कहूँगा, जो कांग्रेस के समय में जो था
बेरोजगारी, और वैसी थी बीजेपी के राज में जो बेरोजगारी जो है, अभी कोई बेरोजगारी है नहीं। मेरे को परमिट मिला, ऑटो लिया, ई रिक्शा वगैरह लाए इन लोगों ने, आज सभी को रोजगार मिला है, सब कमा रहे खा रहे हैं। सब जो भी हमारा 1500 जो भी कमाता हूँ मैं रोज का, वो सब बीजेपी की देन है। बीजेपी सरकार ने 10 साल में काफी अच्छा काम किया है और उससे सभी संतुष्ट हैं। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है।